Hey future doctors, welcome to Dentistionary. Here you will be provided with information for the doctors from the doctors. Today we are back with the discussion on the dental anatomy with the topic maxillary premolars. So let's start with the general introduction. We have 4 maxillary premolars, 2 on the right side and 2 on the left side. Mesial to them is the canine and distal are molars. They have 2 cusps, 1 buccal and 1 lingual. Sometimes there can be 3 cusps. Premolars are posterior teeth because they have an occlusal surface instead of an incisal ridge. The buccolingual measurements are greater than the anterior teeth. The contact areas are broad and nearly at the same level. The crown is shorter than the anterior teeth. The cervical curvature is less than the anterior. This tooth has the function of tearing and grinding food. It has 4 lobes, 3 buccal. The middle is well developed. The buccal cusp, okay, 1 lingual, which is the lingual cusp. Now the maxillary first premolar. The upper first premolar makes contact mesially with the distal surface of the canine and distally with the medial surface of the second premolar. In 80% of the cases, it has 2 roots. This is the tooth numbering system. Then the chronology and measurement. Now the buccal aspect, geometrical outline. It is also trapezoidal in shape. When you see from the buccal aspect, the short side is cervical and the long side is occlusal. Okay. Mesial outline is slightly concave till the half of the crown. Okay. The distal outline is straight or slightly concave till the contact area. The mesial slope is longer than the distal slope. And elevations, it has cervical ridge and buccal ridge. In the depression, it has 2 developmental grooves, mesial and distal to the buccal ridge. Let's take our model. This is maxillary first premolar of the right side. See, from the buccal aspect, it is trapezoidal in shape. Okay, like this. This is trapezoidal in shape. Okay. Then as you can see, this is the mesial side, this is the distal side, and as you can see, distal is somewhat straight, okay, but mesial is somewhat concave. Okay, mesial and distal outlines. It has 2 elevations, the cervical ridge and the buccal ridge. Okay, other than this, it has 2 depressions alongside with the buccal ridge. These developmental depressions, mesial and distal to the buccal ridge. Okay, now the lingual aspect, similar to the buccal aspect but in a reverse manner and with lingual convergence. The lingual cusp is shorter than the buccal cusp by 1 mm. यानी कि आप lingual side से buccal cusp को भी देख सकते हो. The mesial and distal slopes of the lingual cusp have right angles. Lingual surface is spheroid and has a less developed lingual ridge than the buccal ridge. Cervical line is slightly convex or even straight. This is the lingual aspect of the right first premolar maxillary. As you can see here, this is the lingual cusp and this one is the buccal cusp. Okay, as you can see here, lingual cusp छोटी है buccal cusp से, और आप इसमें पीछे की जो buccal side की root जो है वो भी आप देख सकते हो. Now the mesial aspect, geometrical outline, trapezoidal in shape also. The short side is occlusal, the long side is cervical. The outline, the buccal outline is convex till the buccal cusp tip with the maximum convexity at the cervical third. इसकी सबसे ज़्यादा convexity होती है buccal cusp की cervical third के पास. तो buccal outline जो है वो mostly convex दिखती है. The lingual outline is convex with the maximum convexity at the center. इसमें जो convexity है सबसे maximum वो center की side है, और buccal cusp में वो
सर्वाइकल थर्ड की साइड है. द लिंगुअल कस्प इज शॉर्टर. द मीडियल मार्जिनल रिज इज प्रेजेंट at the junction of the occlusal and the middle thirds. The mesial contact area is present in the middle of the third. Surface anatomy. Mesial developmental groove crossing the mesial marginal ridge. Okay. Mesial developmental depression is above the contact area and continues on the root surface. The bifurcation of the root present at the middle of the root length. The buccal cusp tip is in one line with the center of the buccal root, and also the lingual cusp tip is one with the line of the lingual border of the lingual root. This is the mesial aspect, as you can see here. जो mesial depression है इसमें बीच में सेंटर से वो mesial साइड को काटते हुए जाता है, और ये उसकी एक डेवलपमेंटल ग्रूव है जो mesial marginal ridge को क्रॉस करके सर्वाइकल थर्ड की तरफ जाती है, मिडिल वन थर्ड तक जाती है. एंड एज यू कैन नोटिस बकल कस्प लिंगुअल कस्प से बड़ा है. 1 mm 2 mm का फर्क रहता है. ओके. दोनों ही कस्प टिप अपनी लाइन में रहती हैं. जो अगर आप इससे यहाँ से ड्रॉ करोगे लाइन, तो ये एक लाइन में है दोनों की दोनों कस्प टिप से. ओके. Now the distal aspect. Distal surface differs from the mesial in no developmental groove crossing the distal marginal edge, no developmental depression on the crown or root. The contact area is broader. The cervical line is less curved or straight. The bifurcation present at apical third. Now the distal aspect. As you can see here, contact area broader है और सर्वाइकल लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहती है, और इसका जो बाइफिकेशन है वो ऑलरेडी अप टू द एपेक्स रहता है. नाउ द ऑक्लूजल एस्पेक्ट. इट इज़ हेक्सागोनल इन शेप. सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रूव प्रेजेंट. डिस्टल एंड मीजियल ट्रायंगुलर फोसा प्रेजेंट. डिस्टल एंड मीजियल डेवलपमेंटल पिट प्रेजेंट. डिस्टल एंड मीजियल मार्जिनल ridges present. The buccal and lingual cusp have triangular ridges. The mesial marginal ridge is crossed by mesial developmental grooves. The buccolingual measurement is larger than the mesodistal measurement. As you can see here, this is the central groove, central developmental groove. Okay. और इसमें triangular fossas हैं, mesial and distal. Okay. These are triangular fossas some. और इसमें बीच में ridges हैं, buccal ridges and lingual ridges, जो कस्प से डिसेंड करती हैं सेंट्रल की तरफ. ओके. इसमें मीजियल एंड डिस्टल पिट्स हैं, इधर साइड और एक इधर साइड. ओके. देन नाउ द पल्प कैविटी. Buccolingual section has a wide pulp chamber with 2 pulp horns. There are 2 root canals tapering to the apical foramen. In the case of one root, it has 2 root canals. Okay. अगर जो 80% केसेस को छोड़ के जो 20% केसेस है उनमें मोस्टली फ्यूज्ड रूट या वन रूट रह जाती है, जिसमें भी अंदर की साइड 2 रूट कैनाल रहती हैं. द पैलेटल रूट कैनाल इज वाइड इन द मेसोडिस्टल सेक्शन. द पल्प चैम्बर इज बल्बस एंड शॉर्ट. द रूट कैनाल इज नैरो टू द एपेक्स. नाउ द मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर. दीज आर द क्रोनोलॉजी एंड मेजरमेंट टेबल एंड द टूथ नंबरिंग सिस्टम. Buccal aspect. The buccal aspect of the second premolar is not as long as the first premolar and it appears less pointed. तो ये blunt होता है. The mesial slope of the buccal cusp ridge is usually shorter than the distal slope. Mesial slope distal slope से छोटा होता है. The crown and root of the second premolar are thicker at their cervical portions. तो crown और root जो हैं वो second premolar के thicker रहते हैं cervical portions पर. The buccal ridge of the crown may not be as prominent as that of the first premolar. As you can see in this model, the right maxillary second premolar, it's somewhat shorter than the first premolar. Okay. इसकी buccal cusp आप देख सकते हो बहुत ही blunt है, root tapered और distal side की तरफ angled है, tapered है, और ये cervically थोड़ा सा ज़्यादा broad होता है इस तरह से अगर आप देखोगे तो. और बकल साइड पर ये काफ़ी बल्की होता है. ये साइड में कॉन्वेक्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है. ओके. कुछ रिजेस होती हैं इसके ऊपर.
बकल रिज और कुछ डेवलपमेंटल डिप्रेशंस भी होते हैं पर बहुत हल्के होते हैं अगर आप इसको फर्स्ट प्रीमोलर के साथ कंपैरिजन में लिखोगे तो। Lingual aspect, the lingual cusp is longer, which makes the crown longer on the lingual side. That's all for the lingual aspect. Now the mesial aspect. The mesial aspect shows the difference in cusp length between the first and the second premolars. The cusp of the second premolar are shorter, with the buccal and lingual cusp nearly the same length. Greater distance between cusp tips widens the occlusal surface buccolingually. तो ये एक तरह से अडेप्टेशन होता है मोलर्स के लिए कि वो मोलर्स की जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करता है और उसकी कस्प टिप के बीच में काफ़ी ज़्यादा ऑक्लूजल जो डिस्टेंस है वो आ जाती है. नो डेवलपमेंटल डिप्रेशन इज एविडेंट ऑन द मेजियल सरफेस ऑफ द क्राउन एज ऑन द फर्स्ट प्रीमोलर. द क्राउन सरफेस इज कॉन्वेक्स इंस्टेड. अ शैलो डेवलपमेंटल ग्रूव अपीयर्स ऑन द सिंगल टेपर्ड रूट. एक केवल शैलो डिप्रेशन रहता है, वो कभी भी डिवाइड नहीं करती. नो डीप डेवलपमेंटल ग्रूव क्रॉसिंग द मीजियल मार्जिनल रिज इज एविडेंट. ओके, कोई भी डीप डेवलपमेंटल ग्रूव नहीं होती जो मीजियल मार्जिनल रिज को क्रॉस करे. एंड एक्सेप्ट फॉर द वेरिएशन इन द रूट फॉर्म, नो आउटस्टैंडिंग वेरिएशन इज नोटेड व्हेन व्यूड फ्रॉम द डिस्टल एस्पेक्ट ऑल्सो. डिस्टल एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे तो डिस्टल रूट डिप्रेशन डीपर है मीजियल से बस. और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है डिस्टल रूट की सरफेस की, is the opposite of that of the maxillary first premolar, in which the depression on the mesial side of the surface of the root is deeper. तो इसमें डिस्टल एस्पेक्ट ज़्यादा डीपर है बजाय मीजियल के, जैसा कि फर्स्ट प्रीमोलर में होता है. ओके, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो लिंगुअल एस्पेक्ट जो है वो बकल के एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट इक्वल है, जबकि फर्स्ट प्रीमोलर में इस तरह का नहीं था. और इसमें डेवलपमेंटल डिप्रेशन मेनली जो है अगर आप मीजियल साइड से देखोगे तो इतना डीप नहीं है जितना कि डिस्टल साइड से है. ओके, डिस्टल साइड से ये ज़्यादा कॉन्केविटी में जाता है, बल्कि मीजियल साइड से ये ज़्यादा कॉन्वेक्सिटी में जाता है. ओके, अब बारी आती है इसकी दोनों साइड्स की. अगर देखें तो हम मार्जिनल रिजेस को कोई क्रॉस नहीं करती है इसमें डेवलपमेंटल डिप्रेशन कोई भी, ना डिस्टल साइड ना मीजियल साइड. और जो मीजियल साइड है वो ज़्यादा कॉन्वेक्स है डिस्टल साइड के कंपैरिजन में. ओक्लूजल एस्पेक्ट, द आउटलाइन ऑफ द क्राउन इज मोर राउंडेड और ओवल rather than angular. The central developmental groove is shorter and more irregular, and there is a tendency toward multiple supplementary grooves radiating from the central groove. तो जो सेंट्रल डेवलपमेंटल ग्रूव है वो शॉर्ट होती है और रेगुलर होती है, स्ट्रेट नहीं होती है कहीं भी. एंड देयर इज़ अ टेंडेंसी टुवर्ड मल्टीपल सप्लीमेंट्री रूट्स जो सेंट्रल ग्रूव से इधर उधर रेडिएट करती हैं. ये सप्लीमेंट्री ग्रूव्स टर्मिनेट करती हैं शैलो डिप्रेशंस में एनिमल के दैट मे एक्सटेंड आउट टू द कस्प रिजेस. कस्प रिजेस तक भी जा सकते हैं. दिस अरेंजमेंट मेक्स for an irregular occlusal surface and gives the surface a very wrinkled appearance. सेकेंड प्रीमोलर का occlusal aspect, जैसा कि आप देख सकते हो इसकी जो सेंट्रल डिप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है. और इसमें से बहुत सारी सप्लीमेंट्री ग्रूव्स निकलती हैं जो कस्प तक भी जा सकती हैं, इसलिए इसका काफ़ी wrinkled appearance आता है. I hope you found this video useful. If you want the PPT, follow the link below and please like, comment and subscribe. And if you have any doubt or queries about this topic, please comment down below. We will try to solve it as soon as possible. Thank you so much.